करना है. Okay, pay attention. So this is a story about a dadi and dadi's two grandchildren. ठीक है, दो grandchildren है, शिवानी and आर्य. ठीक है. So now let's meet them. ध्यान से सब देखो everyone. So here you can see this is dadi as I told you and this is Shivani and Arya. Okay, कौन है ये? Who is she? क्या नाम है इसका? गर्ल का क्या नाम है, कौन बताएगा? Who will tell me the name of this girl? ओके, नोबल से, नोबल 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 से अनम्यूट करो. नोबल अनम्यूट एंड सिमरन जोत टेल मी. सिमरन जोत फ्रॉम नोबल कम एंड टेल मी हु इज शी, व्हाट्स हर नेम. इसका नाम क्या है? यस बेटा. Your voice is not coming. If you are speaking something, I'm not able to hear you. Now speak. Yes, now speak. Novel, your voice was not coming. Did you say something? Shivani. And what's his name? जो साथ में उसका क्या नाम है? Shivani and her brother Arya. Okay, Shivani and Arya is here, and this is who is she? Dadi. Yes. Now it's a very beautiful scene that we can see here, and Dadi is doing something, and they both are wondering what Dadi is doing. ठीक है, वो दोनों ध्यान से देख रहे हैं कि दादी कुछ कर रहे हैं. दादी ने क्या ले रखा है, क्या है दादी के पास? किसी को पता है कौन सी फसल है? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी कौन सी क्रॉप है ये? यस, पद्मश्री से बताओ. चलो पद्मश्री से वंश बताओ. वंश फ्रॉम द पद्मश्री. यस बेटा, कम एंड टेल मी ये क्या है? ये जो दादी जिसके साथ कुछ काम कर रहे हैं वो है क्या, कौन सी फसल है? वीट. वीट, दैट्स गुड. वीट यानी गेहूं. अब दादी जो है वीट की फसल के साथ कर क्या रहे हैं, ये दोनों जानना चाहते हैं कि व्हाट दादी इज डूइंग विद दिस वीट. सो लेट्स मूव अहेड. अब दादी ने क्या किया? नाउ हियर यू कैन सी सब कुछ इकट्ठा कर लिया उसको. ठीक है, सारी जो वीट क्रॉप थी. एक काम करती हूँ, थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस को थोड़ा सा और फिक्स करते हैं सो दैट यू कैन क्लियरली सी. नाउ इट इज मोर क्लियर आई थिंक. ओके, सो यस. सो नाउ हियर यू कैन सी दादी ने हाथ में जो फसल थी, जितनी आ सकती थी, उसको ले लिया, स्टॉक को ले लिया. नाउ हियर व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू, शी इज गोइंग टू डू this thing. Can anyone of you tell me what is this? Beating crop against a floor or ground, what it is called? पद्म भूषण से बता दो हिमांशी. सॉरी, पद्म भूषण से हरनूर. हरनूर फ्रॉम पद्म भूषण. हरनूर बेटा आ जाओ. यस. नाउ व्हाट दिस इज कॉल्ड बेटा, जब हम ऐसे जोर से मारते हैं फसल को, व्हाट इट इज कॉल्ड? बेटा माइक इज योर ऑन म्यूट. जूम से ऑन करो. यस, नाउ इट्स ऑन. थ्रेशिंग. थ्रेशिंग. और थ्रेशिंग अगर हम इंग्लिश में कहें तो इसका मतलब होता है पिटाई. तो फसल की पिटाई हो रही है. अब क्यों हो रही है फसल की पिटाई? सो दैट वी कैन सेपरेट हर्स, सॉरी नॉट हर्स, ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक. जो डंडी है उससे हमें ग्रेन्स अलग करने हैं. वी डोंट नीड दैट स्टैम्प. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज डन. सो दिस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. सो नोट डाउन, थ्रेशिंग क्या होता है? क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है. ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद. सो इट्स अ वेरी फर्स्ट स्टेप. अब दादी को ग्रेन्स तो मिल गए, बट ग्रेन्स के साथ उसको छिलके भी दिखे. ठीक है, जो ग्रेन्स है उसके साथ छिलके हैं. नाउ व्हाट शी इज डूइंग, उन्होंने ये कुछ बास्केट से लिया और उसको ऐसे रख के जो है इसको हल्का हल्का हिला के उससे जो है ग्रेन्स को कुछ कर रही है. कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड? ओके, आई कैन सी मेनी हैंड्स आर रेज्ड. सो सोया चक्कर से आ जाओ राघव. शौर्य चक्र. यस राघव. सो यस बेटा, व्हाट दिस इज कॉल्ड? सीविंग. सॉरी, रिपीट. व्हाट इज कॉल्ड? सीविंग. अभी भी नहीं समझ आया बेटा, आराम से बोलो थोड़ा. सीविंग.
नो डिडंट। आप ही क्लास में कोई और बताएगा व्हाट इट इज कॉल्ड? ये बेटा आ जाओ। Receiving. नो इट्स नॉट सीविंग, इट्स नॉट सीविंग, इट्स नॉट सीविंग। हु एल्स टेल मी, हु एल्स टेल मी। थ्रेशिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप जस्ट आफ्टर द थ्रेशिंग? अब देखो ग्रेन्स आ गए, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये मेरे पास देखो, नाउ आई विल शो यू। मेरे पास एक मूंगफली का छिलका है और मूंगफली भी है इसमें, ठीक है। आई शो यू, जूम करके दिखाती हूँ, सब ध्यान से देखना। लुक केयरफुली हियर। नाउ कैन यू सी दिस? ये मूंगफली दिख रही है सबको? कैन यू सी दिस? यस। ग्रेन्स आर लाइक दिस। ये ग्रेन्स है लेकिन उसके साथ छिलका भी आ गया। आई डोंट वांट दिस, दिस पील। ओके, मुझे छिलका नहीं चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू? I'm Binoy. यस, विनोइंग। तो स्टेप इज विनोइंग। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेप आता है दैट इज विनोइंग। सो अब हम विनोइंग करके देखते हैं। मैंने जैसे मूंगफली का आपको एग्जांपल दिया है, इसी एग्जांपल को लेट्स सी हाउ कैन वी डू। ठीक है, हम रियल लाइफ में भी इसका यूज करते हैं। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टिल हेयर ओनली। ठीक है, सो लेट्स सी हियर। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ मूंगफली है, रोस्टेड मूंगफली है, जिसके छिलके मैंने अलग किए हैं। ठीक है, ऐसे अलग है, लेकिन आई वॉन्ट ओनली दीज पील। मुझे ये वाली मूंगफली चाहिए जिसमें कोई छिलका नहीं है। सो व्हाट कैन आई डू? मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रख के इस पर अगर ब्लो करूंगी, एयर फूक मारूंगी, तो यू कैन सी। डिड यू सी? सबने देखे छिलका जाते हुए? यस। चलो एक बार और कर देते हैं, ध्यान से देखना एवरीवन, लुक केयरफुली। देखो, हवा जब मैं डाल रही हूँ तो छिलके उड़ रहे हैं, लेकिन ग्रेन्स आर हियर ओनली। सी, सबने देखा फिर से? यस, यस। तो दिस इज विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है बेटा? ग्रेन्स, बिकॉज ग्रेन्स आर हैवियर देन हस्क, और वी कैन से छिलके से। ठीक है, छिलके से हैवी क्या है? ग्रेन्स है। तो ग्रेन्स विल नॉट गो वेरी फार। ठीक है, वो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। लेकिन जो हस्क है, और वी कैन से ड्राई जो लीव्स हैं, बीइंग लाइटर, दे कैन ब्लो अवे विद द विंड टू अ डिस्टेंट। ओके, थोड़ा दूर चले जाएंगे। इज इट क्लियर विनोइंग कैसे होती है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ इट्स क्लियर व्हाट इज विनोइंग एंड हाउ इट हैपेंस। यस, मगज से। यस बेटा, इज इट क्लियर? यस, मगज से। इज इट क्लियर बेटा? फर्स्ट बेंच बॉय, मिडिल रो। चलो आप ही बताओ फिर क्या होती है विनोइंग। चलो आ जाओ, फर्स्ट बेंच बॉय आ जाओ। यस, व्हाट इज विनोइंग बेटा? यस, सही बेटा। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। बेटा व्हाट इज विनोइंग? अभी हमने पढ़ा था ना विनोइंग के बारे में। तो जो भी आपको समझ आए, टेल मी अबाउट दैट, व्हाटएवर यू अंडरस्टूड। यस, व्हाट इज विनोइंग? आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? टेल मी योर नेम फर्स्ट। Process of separating the lighter substance from heavy substance through air is called winnowing. So we can say we can separate husk or we can separate grains from husk using winnowing. Yes or no? कर सकते हैं? Say yes or no. कर सकते हैं? अभी हमने ये करके देखा है, मूंगफली के छिलके और मूंगफली को हम सेपरेट कर सकते हैं विनोइंग से। Yes, can we do that? Yes, that's good, that's good. So ये तो विनोइंग जो कि दादी भी कर रही है, ताकि जो है, अब देखो बेटा एकदम यहाँ जो गिर रहे हैं एकदम पास में, दीज आर ग्रेन्स, और जो हवा के साथ उड़ रहे हैं दीज आर हस्क, जो कि हमें नहीं चाहिए, जो दादी को भी नहीं चाहिए। ठीक है, एंड यू कैन सी शिवानी एंड आर्य सो एक्साइटेड। वो ये सब देखने में कितने खुश हो रहे हैं कि वाओ, दादी इज डूइंग समथिंग वेरी मैजिकल, है ना? कुछ अलग सा कर रही है, जादू कर रही है उनकी दादी। सो लेट्स सी, मूव अहेड। अब ये सारा जो चीज हुई, क्योंकि ग्रेन्स नीचे गिरे तो उसमें पत्थर भी आके फंस गए, कुछ छोटे छोटे बारीक पत्थर। Now what Dadi has to do? Dadi has to separate those pebbles from the grains. So what step or what this process is called? जो हाथ से एक एक पत्थर अलग कर रही है गेहूं से,
सो बताओ कौन बताएगा? आई कैन सी मैनी हैंड्स आर रेज्ड, बट लेट मी कॉल फ्रॉम द कलिंगा इज देयर? कलिंगा, ओके, कलिंगा इज नॉट देयर. सो ओके, आई थिंक पुलित्जर, पुलित्जर से आ जाओ. पिया, पिया इज देयर? पीजेड, जिसके आगे पीजेड लिखा हुआ है. यस, आ जाओ बेटा पिया, यू कम एंड टेल मी व्हाट दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड. इस मेथड को क्या कहते हैं जिसमें दादी इज सेपरेटिंग wheat grains from the stones manually? Yes beta, what it is called? hand. Yes, it is called hand picking. That's really good. Why it is called hand picking? देखो अगर हम hand picking को थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़े, क्या हो गया? हैंड और पिक करना, हाथ से पिक कर रहे हैं, तो इसको हैंड पिकिंग कहते हैं. अब हैंड पिकिंग कहाँ यूज होगी? वेयर वी कैन यूज. अगर मैं आपकी क्लास के बच्चे जो है, सपोज कर लो मैं पद्म भूषण के जो मिडल रो है, ठीक है, जो बच्चे हैं उनके टिफिन बॉक्स सबके एकदम इकट्ठे यहाँ पर इकट्ठा कर दूं, ठीक है, मिक्स कर दूं एक ही जगह, ठीक है, और अब मैं कहूँ आपने जो अपने अपने लंच बॉक्स पिक करने हैं, कैसे करोगे? एक एक जाएगा उठा के लाएगा. कैसे कर रहा है? हाथ से कर रहा है. क्या क्या कैसे, क्या बेसिस है? बेसिस क्या है? मेरे टिफिन का ये रंग है, मेरे टिफिन बॉक्स की ये शेप है, वो ऐसे दिखता है, तो उसके बेसिस पे यू कैन डिफ्रेंशिएट. ठीक है, तो उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर अगर अलग है, सो यू कैन डू हैंड पिकिंग. ठीक है, और कहाँ हैंड पिकिंग कर सकते हैं? यू कैन टेल मी वेयर वी कैन यूज हैंड पिकिंग. बताओ, टेल मी. अगर मैं भी आपको सभी सेक्शंस में एक बॉल में, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के बीड्स यानी मोती दे दूं, और मैं कहूं कि आपने रेड कलर के अलग करने हैं, व्हाइट कलर के अलग करने हैं, ब्लू कलर के अलग करने हैं, सो विच मेथड यू आर गोइंग टू यूज? कौन सा यूज करोगे? यस, विच मेथड यू आर गोइंग टू यूज इन दिस केस? नोबल से मिडल रो में रेड टी शर्ट बॉय. यस बेटा, आ जाओ नोबल, आ जाओ. यस, कौन सा यूज करोगे बेटा? Yes, beta. Which method you are going to use? I didn't hear you. Yes. Hand picking. Yes, we are going to use hand picking. That's nice. That's nice. Sit down. तो दादी ने अब यहाँ तक ये काम कर लिया. अब उनके पास गेहूं आ गया है. अब गेहूं से बनता क्या है? गेहूं से क्या बनता है? अब अगर मेरे पास गेहूं है, ओके, तो गेहूं से बनाऊंगी क्या? शौर्य चक्कर से मिडल रो बॉय. यस बेटा, आ जाओ. यस, फर्स्ट बेंच बॉय, आ जाओ, कम फॉरवर्ड. फ्लावर, यस, व्हीट फ्लावर है ना, हम व्हीट फ्लावर बनाते हैं उससे. आटा, गेहूं का आटा बनता है ना. सो ये जो गेहूं का आटा है वो किससे बन रहा है? गेहूं से. अब गेहूं आ गया, अब दादी ने इसका क्या करना है? आटा बनाना है. तो लेट्स सी, आटा बन गया इनका. यस, तो आटा आ चुका है, लेकिन स्टिल अगर आपने अपने घर पे देखा होगा आटा गूंथते हुए अपने घर पे किस किस ने अपने पेरेंट्स को देखा है? हैंड रेस. इससे मुझे पता चलेगा आप में से कितने अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं इन किचन. Let's see how many of you help your parents in cooking. Okay, I think मगासिया से कुछ ही बच्चे करते हैं. They do not help their parents. Okay, that's not good. नोबल से काफी बच्चे करते हैं, पद्मश्री से भी, पद्म भूषण से ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑस्कर से भी सारे ऑलमोस्ट, शौर्य चक्र से एवरीवन, दे आर कमिंग. दैट्स नाइस. सिट डाउन बेटा, चेयर पे बैठ जाओ. And Param Chakra, that's also good. PJ also, that's nice. So you all are such a wonderful students. सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हो आप, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो. तो अब ये हेल्प मैंने क्यों पूछा? तो आपने एक छन्नी देखी होगी घर में, देखी है सबने छन्नी, जिसको सीफ कहते हैं. ओके, भी सबने देखी है. अब उसमें क्या किया जाता है? आटा डालते, पुट आटा ऑन दैट छन्नी, फिर उसको हल्का हल्का शेक करते हैं. अब उसमें से जो आटा है जो एकदम बारीक है वो नीचे आता है, ऊपर क्या रह जाता है? क्या रहता है? ऑस्कर से चलो फर्स्ट गर्ल बता दो, चलो मिडल रो.
योर हैंड इज, यू रेज योर हैंड सिंस लॉन्ग। चलो ऑस्कर से आ जाओ, फर्स्ट बेंच मिडल रो गर्ल, आ जाओ बेटा। अब वो जो छन्नी है उसमें क्या रह जाता है बेटा? व्हाट इज लेफ्ट इन दैट? यू आर ऑन म्यूट बेटा, आप म्यूट पे हो। यस यस बेटा बोलो। मोटा मोटा जो आटा है वो रह जाता है, जिसको ब्रांड कहते हैं। यस Sieving. यस, वो रह जाता है, ठीक है। अब वो क्यों रहता है? क्योंकि जो हमारी छन्नी है उसका जो पोर साइज है, छेद है, वो इतना ही आने देता है। तो उसको हम जरा देखें कि हम अगर करके देखते हैं, लेट्स डू इट हियर, क्या ये चीज यहाँ पर हो रही है या नहीं हो रही? ठीक है। सो नाउ हियर ऑन माय टेबल यू कैन सी दैट, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी फिक्स इट आउट। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम फिक्सिंग इट फॉर यू सो दैट यू कैन सी मोर क्लियरली। यस, नाउ इट्स मोर क्लियर, आई थिंक सो। यस। सो अब बेटा मैं आपको यहाँ पर सीविंग करके दिखाऊंगी। सो आई हैव दिस सीव विद मी, दिख रहा है सबको ये सीव, बड़ी सी छन्नी? यस। सो यहाँ पर बेटा इसके जो ये मैश है, जाली जो है, इसका जो पोर है वो छोटा छोटा है। जो पोर, इसका जो छेद है, इससे कम बारीक वाली जो चीज होगी वो इससे नीचे निकल जाएगी, जो बड़ी होगी दैट विल स्टे हियर। ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पर एक मिक्सचर है। सो लेट्स सी इसमें से कौन सी चीज निकलती है बाहर और कौन सी नहीं निकल पाती। सो लेट्स सी। सो आई एम डूइंग इट हियर सो दैट इट इज मोर एविडेंट टू यू। कैन यू सी नाउ? यस, कैन यू सी समथिंग white color substance is coming out of this sieve? Yes, हम ऐसे ही करते हैं ना घर पे भी, ऐसे आटा छानते हैं। यस, लाइक दिस। और ऐसे नीचे आटा आ जाता है जो बारीक है। जो हमारे पास ऐसा रह जाएगा बुरा सा, दैट जो इसका साइज बड़ा है इस छन्नी से, वो ऊपर रह जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड सीविंग। ये सीविंग है जो पहले आप विनोइंग के लिए कह रहे थे। देखो इसमें हवा का यूज नहीं है, इसमें यूज किस चीज का हम कर रहे हैं? किस साइज का? जिस पार्टिकल का साइज, सब्सटेंस का साइज सीव से बड़ा होगा दैट विल रिमेन ऑन अपर साइड, जो सीव के दूसरी साइड रहेगी। जिसका साइज छोटा होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। सो दैट इज सीविंग। इज इट क्लियर? सीविंग, रेज योर हैंड। सीविंग इज क्लियर टू एवरीवन। क्या होती है सीविंग? नाउ इट इज इन योर डेली लाइफ दैट यू आर यूजिंग इट। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सीविंग। अब देखते हैं दादी क्या कर रहे हैं। लेट्स गो टू द दादी अगेन। Oh wow. So now Shorya, sorry, Arya and Shivani are hungry. तो वो अपनी दादी को कहते हैं कुछ बना के दो, तो दादी रोटी बनाती है। So here you can see they baked chapatis or they are enjoying their meal. Okay. Now it is now next morning. ठीक है। अब यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है, व्यू अच्छा लग रहा है। Are you liking this view? Say yes, raise your hand. Yes, yes. Ah, that's really good. That's really good. So here, Shaurya, sorry, Arya and Shivani also liking this view. You can see they are happy. Yes. Now again, Dadi is baking something. I think they are baking some, आलू परांठा. ठीक है. किस किस को आलू का परांठा पसंद है? Raise your hand. Everyone like that. That's really nice. Okay. So now here you can see. अब दादी ने आर्य को कहा कि पानी लेके आओ। सो हियर यू कैन सी कैसा पानी है, कैसा पानी है ये बताओ? पी सकते हैं इस पानी को? यस, कैन वी ड्रिंक दिस वाटर? यस, नो, है ना, सभी मना कर रहे हैं, नो, दे कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर। सो नाउ व्हाट आर्या एंड शिवानी हैज टू डू? अब इन्हें क्या करना पड़ेगा बताओ? हु विल टेल मी? यस यस, आई कैन सी, बट आई एम गोइंग टू कॉल फ्रॉम एमजी निहित, निहित फ्रॉम एमजी मगा से। आ जाओ बेटा, आ जाओ, कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। यू हैव टू टेल मी। अब इतना गंदा पानी ये बच्चे नहीं पी सकते। इवन वी कैन, आई कैन ऑल्सो नॉट ड्रिंक, है ना, हम नहीं पी सकते, हम बीमार हो जाएंगे। अब दादी कह रही है, बिकॉज दादी, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। दादी इज ए साइंस टीचर, नॉट नाउ, शी इज रिटायर्ड साइंस टीचर। वो पहले एक साइंस टीचर थे, रिटायर हो चुके हैं। सो शी हैज साइंटिफिक माइंड। ठीक है।
अब इस माइंड में हम देखते हैं दादी ने क्या आइडिया दिया, लेकिन उससे पहले हम जाते हैं मगासे में निहित के पास। यस निहित, बेटा बताओ अब इस पानी को कैसे साफ किया जाए? filtration. फिल्ट्रेशन। नो, बिफोर दैट अब पानी का लोड देखो, मिट्टी का लोड देखो, इसमें इट्स टू मच। सो व्हाट वी कैन डू, नानी इज सेइंग, दादी इज सेइंग कि इस पानी को थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, अनडिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब दिस वाटर। तो ये कौन सा स्टेप हम मेथड यूज करने वाले हैं? दादी कौन सा मेथड यूज कर रही है? शौर्य चक्कर बेटा अपनी सीट पे रहो, सब गिर ही जाओगे। सेटल डाउन फॉल, पहले बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो शौर्य से बुलाते हैं जतिन को। जतिन इज देयर? जतिन, यस बेटा आ जाओ। Where is that son? ये अच्छा जतिन नहीं है, राघव इज देयर? अच्छा बेटा अच्छा राघव का तो पहले टर्न आ चुका है, बेटा आप बैठो। फर्स्ट बेंच बॉय आ जाओ, चलो फर्स्ट बेंच बॉय। चलो शौर्य चक्कर से आ जाओ फर्स्ट बेंच बॉय। अब आप बताओ मुझे Filtration. कौन सा बेटा, कौन ये क्या स्टेप है जिसमें हम वाटर को अनडिस्टर्ब रख रहे हैं, हम उसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे, क्या कहते हैं इसको? Filtration. नो 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 नो, फिल्ट्रेशन नहीं, फिल्ट्रेशन नहीं। चलो आप ही के साथ जो बैठा था लड़का, बेटा आ जाओ बेटा, आप आ जाओ। Sedimentation. सेडिमेंटेशन, यस इट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। फटाफट सेडिमेंटेशन भी करते हैं, ठीक है, ताकि किसी को कोई डाउट ना रह जाए बाद में कि हाँ सेडिमेंटेशन क्या होता है। तो ये आप घर पे भी कर सकते हो, देखो जो जो मैं आज आपको करा रही हूँ यू कैन डू एट योर होम ऑल्सो, ठीक है। और ये आप अपने घर में दिखा भी सकते हो, यस यू हैव डन दिस इन योर क्लास। सो देखो अभी मेरे पास ग्लास है, ठीक है, इसमें प्लेन वाटर है, आई एम एडिंग सॉइल, मिट्टी डाल रही हूँ। नाउ इट इज लाइक दैट, जैसा हमने अभी देखा था, आर्या ने जो लेके आया था, जस्ट लाइक दैट, है ना, वैसे ही हो गया पानी गंदा। अब इसको हम थोड़ी देर ना ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, वी विल जस्ट अ मिनट, यस वी विल लीव इट एज सच, ठीक है, हम इसको अनडिस्टर्ब मतलब बिना छुए इसको ऐसे ही रहने देंगे, ताकि वी विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। हम थोड़ी देर में देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो उस थोड़ी देर के लिए आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू बेटा, एवरीवन क्लोज योर आईज फॉर 10 seconds, काउंट टिल 10, 1 से 10 तक काउंट करो। सो लेट्स सी द मैजिक हियर। चलो एवरीवन क्लोज योर आईज एंड काउंट टिल 10, मैं काउंट करती हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and here is 10. Did you see this magic now? किस किस को मैजिक दिख रहा है यहाँ पर? How many of you can see the magic? Yes, I can see Shaurya Chakra is raising their hand. What about others? Padam Shri, Oscar, Padam Bhushan, Paramveer Chakra, TJ and MJ. Yes? Are you able to see the separate layer of this sand is here and water is here? Can you see this thing? Yes? सबको दिख रहा है ये? Yes? मिट्टी देखो नीचे सेटल हो गई है और पानी जो है ऊपर एक क्लियर लेयर बन गई है, और यही चीज दादी ने की है। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू, हमें एक और ग्लास लेना है और ये जो ऊपर की क्लीन लेयर है इसको इसमें डालना है। अब मुझे इस प्रोसेस का नाम कौन बताएगा, ये जो मैं अभी कर रही हूँ, व्हाट इट इज कॉल्ड? यस पद्म भूषण, फर्स्ट रो गर्ल आ जाओ, मिडल मिडल रो, फर्स्ट बेंच गर्ल। यस बेटा, व्हाट दिस स्टेप इज कॉल्ड, ये वाला ये जो भी कर रहे हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड? डिकेंटेशन, यस इट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो इसमें हमने क्लियर लेयर को निकाल दिया, ठीक है। सो लेट्स गो बैक टू द दादी, लेट्स सी व्हाट शी हैज डन, उसने क्या किया, दादी जी ने क्या किया, उनको भी देख लेते हैं। लेट्स गो बैक टू द दादी। यस सो हियर इज दादी। सो उन्होंने भी अनडिस्टर्ब रखा, ओ वाओ, उन्होंने भी डिकेंटेशन किया। यू कैन सी जो यहाँ पर एक क्लीन लेयर है उसको वो सेपरेट एक घड़ा जो है उसमें डाल रहे, लेकिन दादी सोचती है भी पानी थोड़ा गंदा है। बट शी डिड, सो हियर यू कैन सी नाउ, फिटकरी किस किस को पता है घर में यूज होती है टू क्लीन वाटर, किस किस को पता है कि घर पे अगर हमारा पानी में थोड़ी मिट्टी अगर हम उसमें एलम डाल दे, फिटकरी डाल दे, तो मिट्टी को जल्दी से सेटल डाउन होने देती है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग। क्या कहते हैं इसको? लोडिंग।
सो दादी भी एलम जो है पानी में डाल रही है सो दैट जो मिट्टी का लोड है वो कम हो जाए। ठीक है, नाउ लेट्स गो एंड सी व्हाट दादी इज अप टू। अब दादी क्या करते हैं, अब दादी के पास गांव का एक जो पर्सन है वो आया, उसके पास ये चावल है और चावल में कील आयरन नेल किसी तरह उससे डल गई है। नाउ ही इज वंडरिंग कि वो कैसे इसको निकाले आयरन नेल्स को, चाव क्योंकि बहुत सारे आयरन नेल्स हैं और चावल भी वैसे ही है दाने दाने। सो हाउ इट विल सेपरेट, सो यस फ्रॉम द नोबल नित्या इज देयर, नोबल नित्या, नोबल से नित्या आ जाओ बेटा। सो अगर हमारे पास आयरन नेल्स है, ओके, तो हाउ कैन वी सेपरेट इट आउट, कैसे हम उसको अलग करेंगे। यस बेटा, यस नित्या, यस नित्या, हाउ वी विल सेपरेट इट आउट। Beta, your voice is not coming properly. What are you saying? No, your voice is not coming, beta, properly. It's cracking. मैग्नेटिक सेपरेशन, चल मैग्नेटिक सेपरेशन आपके पास एकदम सही का, टोटली राइट एंड इट इज करेक्ट ऑल्सो। ठीक है, सो मैग्नेटिक सेपरेशन वी कैन डू इट हियर ऑल्सो। यस, हियर इज आई हैव ए मैग्नेट ऑल्सो। ठीक है, मेरे पास भी एक मैग्नेट है बिकॉज आई एम ऑल्सो साइंस टीचर लाइक दादी। Okay, so I also have these things with me. So I'm fully prepared to show you this. So here you can see I have also this mixture. अब इस मिक्सचर में से मुझे ब्लैक वाली चीज जो निकालनी है दैट इज आयरन। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसको जो मैग्नेट है ये देखो बेटा, आई एम मूविंग इट हियर एंड यू कैन सी दिस थिंग इज गेटिंग क्लीन। ब्लैक चीज जो यहाँ पर सारी थी वो देखो एकदम सफेद हो रहा है क्योंकि आई एम सेपरेटिंग ऑल द फाइलिंग्स फ्रॉम हियर। जो भी ब्लैक चीज थी, कैन यू सी इट इज क्लीन नाउ। यस, इज इट क्लियर? यस, इट इज क्लीन। अब इसमें देखो कोई ब्लैक चीज नहीं है क्योंकि सारा मेरे मैग्नेट पे आ चुका है। यू कैन सी मैग्नेट देखो चारों तरफ से कैसे भर गया है छोटे छोटे आयरन नेल से। सो दिस मेथड इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। और मैग्नेटिक सेपरेशन में सिर्फ जो लोहे की चीज है या निकल और कोबाल्ट की जो चीज है ओनली दोज कैन गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट। सारी चीजें अट्रैक्ट नहीं होती, जैसे अभी हमने देखा तो दाल वहीं की वहीं रही, जो सैंड थी वो वहीं की वहीं रही, वो मैग्नेट के साथ नहीं अट्रैक्ट हुई। ठीक है, सो इट्स ओनली वैलिड अप टू आयरन निकल कोबाल्ट, अगर ये तीन चीजें हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन भी करो बिकॉज दीज आर गोइंग टू कम इन योर एग्जाम ऑल्सो, और असाइनमेंट भी हमने करनी है लेटर ऑन। ठीक है, सो दिस इज मैग्नेटिक सेपरेशन एंड दादी ऑल्सो डिड दिस। ये देखो दादी भी यही चीज कर रही है, दादी ने मैग्नेट लिया और उससे देखो सेपरेटेड आउट आयरन नेल्स। ठीक है, अब दादी क्योंकि साइंस की टीचर रही हैं तो गांव में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है जो साइंस से रिलेटेड है लोग इनके पास आते हैं। ठीक है, अभी अब इनके पास कौन आ रहा है, दूध वाला मिल्कमैन, वो दही लेके आएगा। ये देखो दही लेके आ गया। अब दादी दही को क्या करेगी, क्योंकि वो आर्या का फेवरेट चीज बनना है। क्या बनना है, दही से क्या बनेगा, मक्खन। तो आर्या को मक्खन खाना है, तो दादी व्हाट शी इज गोइंग टू डू, शी इज गोइंग टू मेक बटर। कैसे, थ्रू दिस प्रोसेस। व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, किस किसने अपने घर पे घी बनते देखा है, मक्खन बनते देखा है, हाउ मेनी ऑफ, यस almost everyone, that's really nice. And what this process is called, who can tell me what this process is called, who can tell me? Yes, novel से middle row fourth bench आ जाओ बेटा, गर्ल आ जाओ फटाफट, कम फास्ट। what this process is called, ये जो दादी यूज कर रहे हैं टू मेक बटर, what this process is called? yes बेटा, कर यू, यस यस, क्या कहते हैं इसको बेटा, मिक्सिंग, नॉट, yes, well can tell me, yes,
और किसको पता है इसके बारे में? Who can tell me? पद्म भूषण, मिडल रो, आ जाओ, फोर्थ बेंच पर आ जाओ, थोड़ा फास्ट, आ जाओ जल्दी आओ। यस बेटा, यस बेटा आ जाओ। Yes, it is called churning. Yes, it is called churning. ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा churning. It is called churning. अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि what दादी is doing now. So now here you can see, as I told you, दादी क्या है? एक रिटायर्ड साइंस टीचर। अब एक और जो है उनके पास गांव में जो लोग थे वो आए हैं हेल्प के लिए। अब क्या हेल्प चाहिए कि जो उनका पानी था उसमें चाय पत्ती गिर गई है। Now they need to separate these tea leaves from the water. Let's see what she is going to do. So what she is doing now? What this method is called? Who can tell me? ये परमवीर चक्र। यस, लास्ट रो। यस, आ जाओ फटाफट। सभी ने नहीं आना, एक ओनली वन। ब्लू टी शर्ट बॉय, ब्लू टी शर्ट बॉय आ जाओ, कम फास्ट। Filtration. Yes, this is called filtration. That's nice. This is filtration. So let's see now what Dadi is doing. No, it's not Dadi's turn. अब बेटा ये वाला तो आप पढ़ चुके हो, मिसिबल इमिसिबल लिक्विड्स पढ़ चुके हो सब इन मटेरियल्स अराउंड अस में। यस, यू हैव स्टडीड अबाउट दिस। सो नाउ लेट्स गो बैक। ठीक है, आज हमने जितना पढ़ा वो सारा जो है दादी के थ्रू पढ़ा। किस किस को ये समझ आ गया? यस, किस किस को दादी की स्टोरी समझ आ गई? एवरीवन, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। सो विद दिस, ओके, सो अब आपके बेटा साइंस सॉरी इंग्लिश क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट। टेक अ 2 minutes break. ओके, बाय स्टूडेंट्स। Okay, so I hope all of you have this worksheet with you. Do you have this worksheet, English worksheet? I want all of you to put your all other things inside your book bag and just keep your worksheet outside, okay? So that when the time comes, we can quickly go through the worksheet. Okay, so I hope you had a very interesting class of science and now you're all geared up for English, okay? So I want everybody to be seated now. The 2-minute break is over. We can take 1 more minute to settle down. Just settle down so that we start. And once we start, I want everybody's attention, okay? I want complete attention so that we don't miss anything. And you, like, you learn everything very well. That's it. So your 1 minute is going to be over now. And let us begin with jumbled sentences. So first we will see what are jumbled sentences. You have already done, but I'll just it's like a revision. Okay. So here we are. What are jumbled sentences? They are collection of words. They are a collection of words that have been tossed together. Tossed means like just put together. Okay. They have been just tossed. Like, you put things in a bowl and you move it like that. That is called tossing. So tossed together in a random order. Not right order, any order. Okay. Making them difficult to understand at first glance. So when you look at them, you suddenly feel, what is this? This doesn't make any sense. This group of words don't make any sense. Then you realize that they have been put in the wrong order. And now they have to be put in the right. I don't know which is this classroom, PJ. Okay. Let me check here. Pulitzer, I think so. Pulitzer classroom, there was a lot of movement. But just settle down and pay attention to what I have to say. Okay. Even Padma Bhushan, I think so. You brought water for everyone. Very good. I'm sure your friends are happy that you did some social work for them. Sit down now. Okay.
Can you hear me? Can you hear me? Raise your hand if you hear me. Perfect. So here we are. This is jumbled sentences. Now, what is the challenge? Now, when words are put in random order and they don't make any sense, then obviously to put them in the correct order is like a challenge. Is rearranging these words. So we have to rearrange them in such a way that they make complete sense, form a complete and logical sentence. So we have to do this. Okay, so this is the challenge. Now, this exercise not only, now why should we, if a sentence is given in the right order, why is the need that we put them in a jumbled manner? Now see, it is very helpful. What does it do? It sharpens our language and grammar skills. So our language skills also become better when we unjumble the sentences or we put them in the correct order, and also our grammar skills. We realize that how grammatically correct sentences and we try to put in that order and we learn it. Also enhances your ability to think critically and logically, which is a very important life skill. Critical thinking, critical and logical thinking is one of the most important skills in life. Okay, so it enhances that. So our language skills also become better. Our critical and logical skills also become better. So these are all the uses why we need these jumbled sentences. Now let's go to the next one. Yeah, one more question. How do we solve jumbled sentences effectively? Okay, Sare in the wrong order there. How? How can we do that? So first, you all know what to do. Whenever, even if they are given in jumbled order, first thing you have to do is look for the subject. Look for the subject. And subject is a noun. Okay, the subject is a noun. So look, identify the subject and verb first. So you have to identify these two things, that which is a subject and which is a verb. In those jumbled letters, once you know this, you will be able to do justice. Like, you'll be able to do. Look for clues like articles, prepositions, conjunctions to guide the arrangement. So first you have identified the subject and verb, and in English, subject, verb, object. This is how your sentence comes. So first identify the subject and the verb, and then look for all these things, articles, a and the, prepositions, to, by, for, up, under, all these conjunctions, all the joining words. So just look for them and guide the arrangement. Then rearrange the words logically to ensure the sentence makes sense. Then try to put them in the right order that it makes sense. Check for subject-verb agreement. This is very important. Okay, subject-verb agreement is if it is a plural subject, we need a plural verb. If it is a singular subject, we need a singular verb. Okay, so this is again very important. And obviously, you cannot forget the punctuation. If you think there should be a comma, put the comma, full stop, exclamation mark, question mark, because that is also required. Without it, your sentence will become wrong. Okay, so all these things you have to keep in mind. Now, let's move to the next one. Now, how to identify subject? In the previous slide, I told you, first thing, identify the subject and verb. But how to identify the subject? They are usually nouns or pronouns. Okay? अब आपको nouns or pronouns तो पता ही है. So when you look at them, then you will understand that this is the subject. That tells who or what the sentence is about. Okay? So you know subject and predicate. The verb expresses the action. Okay, now see, we will say,
Playing are the children football. So what the children is noun, are playing is your verb, helping verb and verb. So this is the action happening. Okay. So here children is the subject and are playing is the verb. So you will put it in the right order. Next is expresses state of being. Like in what state? Now here he became a famous actor. It can be like, he's in a happy mood, unhappy mood. He's like, fat, thin, he's smart, he's intelligent, he's famous. This is the state of being. Okay. So became he actor famous. So he is the subject. And what did he become? Actor. So he became is the verb and famous actor. So this is how you will identify the subject and the verb. Next. Now this is your basic subject. When we make simple English sentences, we usually follow the subject, verb, object pattern. So put the subject and everything and the adjectives such as fat and Joe, whatever is describing the subject, you will put it with that in the beginning. Okay? Any words describing the subject in the beginning. Put the verb, then you will put the verb and adverbs such as often, usually after the subject. So after the subject, you will put verbs and adverbs. Then object will come at the end. And any verb or any adjective which is describing the object will come in the end. So this is how you will do it. Okay. So I hope you are understanding. If you have any questions, you can ask me right now. So the gist, like what you have to remember is that you have to make a sentence with first subject, then verb, and then object. The subject will have certain things which are describing it that you will put with the subject. Then you will put the verb, you will put the adverb, and you will, in the end, you will put the object. And whatever things are talking about the object, you will put in the end. So this should be your order. Subject, verb, object. Yeah. Complete the sentences using the jumbled words. Okay. Now, let's see here. Who will solve the first one? Who will solve the first one? Yes, I can see from Shaurya Chakra towards my right. There was somebody raised the hand. Okay, come. Okay, Paramir Chakra. Yes, first bench, middle row, come. And I'm inviting from Paramir Chakra only the boy on my left who raised his hand right now. You can also come for the second one. Okay, so here. Never I have seen such a movie. Yes. I have never seen such a movie. Very good. See, so first thing is, this is your subject. This is your verb. Okay. I have then never seen such a movie. Okay. These are all things like you have all the articles and prepositions or whatever is there. Next. Very good. School every day she walks to. Who will come and answer this question? Max is towards my left, last bench. Towards my left, yes, come. Come. And Max says the boy who's standing, you can also come. For the next one. Okay, for the next sentence. School every day she walks to. She walks to school every day. Perfect. So she every day walks to, like, that would have been wrong. So she is the pronoun, it is your subject. Walks is the verb. Okay? And preposition and object every day. Okay, that is a adverb. Now the third one. The cat under is table the. Okay, that boy I had called from Maxis, the other boy. Yes. Under the table. The cat is under the table. Okay.
cat is the subject. The cat is your helping verb under the table. Okay. To going, we are beach the. Okay, who will come and answer this? Oscar. I can see middle row, there is a last bench, second last bench. Okay, come. Yes, quick. Aaja bachche, aaja. Come, don't look here and there. To going, we are beach the. Okay. First, yes, We are going to the beach. very good. We is the subject. Are is your helping verb. G, going is your main verb to the beach. Very good. Homework finished. I have my. Okay. Yes, I had called another child who will say, okay, Shaurya Chakra, middle, first row. Yes, come. I I have to do my homework. Very good. I is the subject. Have is your this thing, linking or link verb, or finished is your main verb. My homework. So this is how you will do it. These are very simple ones, just to make you understand. Then you will do a little more challenging ones. Okay, and I'm sure you will do. Now choose the correct order of the jumbled sentences. Now this is, which of the following is the correct order for the storm during damage shed? Okay. So this is the jumbled words. Which one out of these three, which option is the correct one? Which one out of these three is the correct? Okay, Max has say, towards my left, I can see the girl coming out. Yes, come out. Yes. And Shaurya Chakra, towards my left, first bench, that boy who's standing. You come for the next one. Yes. Paramveer Chakra. The boy on my, yes, on my right. Yes, come. Yes, come. Okay. So which one out of these three options is the right one? Which one? Read out, beta. Read out. I like when you read the whole sentence. The shed was damaged during the storm. Very good. The shed was damaged during the storm. Very good. The shed is your subject. Was damaged is your verb during the storm. Very good. Which of the following is correct for a cat? A cat got a mouse. A cat got a mouse. Okay. Yes, I call that little boy from Paramveer Chakra. Come out, beta, who's standing on the first bench, and answer this. Which one? Option A. Yeah. See, grammatically, a mouse or a cat is also not wrong, but we know in reality that a mouse can't get a cat. So the first one, a cat got a mouse, is right. Okay. A cat got a mouse is right. Very good. So now we move on to the next one. Yes. I have not put any slashes. Just go through that and make a correct sentence. Okay, who will do it? Nobody has come from Nobel house, Nobel classroom. I want someone to come from Nobel. Who will come out from Nobel? None? That's very bad. Okay. Padma Bhushan. Anyone interested in coming and answering? Okay. I can see two children. So one of you can do the first one, and the other one can do the second one. Middle row, first bench, girl, and middle row, third bench, girl. The first one will do the first sentence. The second one will do the second sentence. Okay. Children not allowed below 8 years old. Below 8 years old. Below 8 years old children not allowed. बच्चे फर्स्ट चीज क्या होनी चाहिए? सब्जेक्ट. फर्स्ट चीज होनी चाहिए सब्जेक्ट.
So who will rectify this? यहाँ गलती होगी थोड़ी सी. First is यहाँ पे subject आना चाहिए. Who will rectify this? Yes. I can see Ramses in middle. Yes, आ जाओ. Come out. Ramses in middle row. First bench. Come out. Max से sorry. Max से come. Okay, children not allowed below. First thing should be your noun. Allowed. Children below 8 years old are not allowed. Okay. So children below 8-year-old are not allowed. Next, would like to see such a sight. No one. No one. I had called that girl to come and answer. Where is she gone? She was from, I think so, Paramveer Chakra. Okay. I can see a small boy jumping. Shaurya Chakra, second bench. Aja. When no one would like to see such a sight. Very good. No one would like to see such a sight. Okay. Boys always succeed who are hard working. So पहला सबने सोचना है कि first it has to be the subject. So कैसे आपने लेना है? I think so. Pulitzer. There is a girl who has raised her hand towards the wall. Third or fourth bench. Yes. Come out. Okay. Who wants to come out here? Padmashri, the boy who's standing, can come out. Come out, come out. Yes. You can. Yes. Boy. Yes. Who are. Yes. Always succeed. Yes. Boys who are hardworking always succeed. Okay, very good. First has to be the noun. Kind of you to help me. Is it very? Is it very? Who will answer this? Nobody from Nobel today? Are you being lazy? Let me call someone from Nobel. Okay, let me call someone from Nobel. Whom should I call? Jujhar and Baljot. Jujhar. Who's Jujhar? Very good, Jujhar. You are caught now. Aja, fatafat. Come walk faster. Walk, kind of you to help me. Yes. Okay. Who will answer this? Jujhar, are you answering it? Yes, sir. Yes, answer it. Yes, I can't hear you. I can't hear you. It is very kind of you to help me. It is very kind of you to help me. Very simple sentence. He grew up wisely. He grew up wisely. Yes, Paramveer Chakra. I can see. Okay. Okay. Come, you come first bench. Yes, come. Yes, it is going to be he grew up wisely. This was a trick. Okay, this was a trick to make you see if the sentence formation is right or not. And it is right. Okay, he grew up wisely. So this is all we have done. Now we are done with this PPT. Now you have this sheet and you have to do this. Don't forget your sentence will start with the noun. Okay, that is the subject. It will end with the object. In the middle, it is going to be your verb. You should know how to place the prepositions and articles, that is all adjectives. Okay, you should know that because you are in grade 6 now and you have learned a lot of English. And second thing is you should remember where to put punctuation. And one more thing. Whenever there is a full stop with a word, it means that word is going to come at the end. Because uske baad kuch nahi aega, there is a full stop. And if you are going to frame a question, you have to put a question mark.
if you are going to frame an exclamatory sentence, you have to put an exclamation mark. So these things you have to remember, okay? These things you have to remember, and you have to look at all the commas or full stops which are given here in your jumbled words. Please go through the sheet and quickly start doing it, okay? Very nice. You have like 5 to 7 minutes. Go through them and do it. I want to see everybody at work. Come on, fast. Very nice. I'm sure you're loving it. You have accepted the challenge. Because this is a little challenging. Definitely. Beta, stop looking here and there. I want everybody, like, scratching your heads and doing the work. Come on. Scratch, scratch, think, think. Paramveer Chakra, why are you moving, beta? Middle row, first bench. What happened? If you have any query you want to ask me, and once again I'll repeat myself, okay? If you people have any query, whenever I'm there in the class, you want to ask me any question, you're most welcome. Don't hesitate. Don't keep the questions with you. Ask and get answers. Seek answers. That's how we all learn. Try to use your own thought process, okay? Stop looking in other person's sheet. Noun, verb, object. Okay? Noun, everything which the noun has, the article which should be with the noun, the adjective which should be with the noun. Then when it comes verb, you should know which adverb is going to be with the verb. Then object. So what kind of object, like, the adjectives and adverbs with the object, put everything there. And it will be very smooth. Yes. Are you talking to me? Wait for a while. Pero मैंने काफी देर से
Okay, I'm sure you all have done at least half of the sheet. So when you finish, you can raise your hand. So if I see a lot of people have finished, then we can start the discussion. Okay. Padma Shri, quite a few have done. We'll wait for another 2 minutes. Okay. Let the other classes also finish. Let the other classes go through your sheet again and see if by any chance something is not right. Go through it. See that you put the things in the right order. Read out the sentence loud and see if it is the right, you frame the right, put the word, arrange the words in the right way. What happened to Pulitzer House? What happened? Hanji, doubt. What is a doubt? Which one? First one? Sixth one. Okay. Yes. What is the doubt? What is the doubt? What? Could you please repeat because I'm yeah. बोलो फिर से बोलो. बच्चे it is a very correct. See, fruits के बाद full stop लगा हुआ है. So fruit should be at the end. Okay. It should be at the end because it's like after fruits because it has a full stop. So you should know how to arrange. First thing should be your this thing subject, and your subject is either a noun or a pronoun. So you should know how you go about it. So I don't think so there should be any confusion in it. So center में आपका verb आएगा, and the words which go with both of these, like the words which will go with your subject, the words which will go with your verb and with your object, you should know. So because there is a full stop after fruits, so that should be the last word of the sentence. Okay, that is the trick. Okay, so I think so we should begin with the discussion. And I can see 2-3 houses, there is lot of movement and I don't know why. Teachers, please, I request you to take care. The first one, who will come and answer this? Who will come? Okay, Padma Shri, I can see a hand raised. Middle row, first boy. Yes, come. And then I can see a hand raised in Padma Shri. On my left, there are 2 girls who raised their hands. They can also come. So, what happened? Why there is so much movement in Oscar House and in Nobel? Why? Teachers, please, it's a request that you make them sit down and after the discussion, let them move out. Okay. Come in, yes. I just called a boy outside. So, yes. What kind of goods do we acquire from? What kind of goods do we acquire from wood? What kind of goods do we acquire from wood? Okay. So this is like what is it? It should end with a question mark. What kind of goods do we acquire from wood? And then it should end with a question mark. Paramir Chakra, the boy in yellow, blue t-shirt. Can you come out for the next one? You need a little thinking here, okay? That who was yes. What do we acquire kind of from wood? Yes. What kind of goods do we acquire from wood? Okay, so this is done. Next one. Our farmers buy the exploited. Now you have to think, we know this, okay, that who was exploited. Okay, when the Britishers lived in India, who was exploited? So we will accordingly frame the sentence. Okay, anyone from Nobel? Anyone from Oscar?
Anyone from Pulitzer? Okay, that's bad. Anyone from Padma Bhushan? Padma Bhushan? Okay. Paramveer Chakra, come out. Yes, the boy who's raised his hand. The Indian farmers were exploited by the English farmers. Yeah, if farmers is written only once, okay? So you will say the Indian farm. हम इसमें कोई अपने आप word add नहीं कर सकते. Neither we can delete any word in jumbled sentences, nor we can add. Whatever is given, we have to use only those words, okay? So very nice. The Indian farmers were exploited by the English. The Indian farmers were exploited by the English. Next. The do not please road letter. Okay, who will answer this? Who will answer this? Yes, I can see a hand raised. Maxis said there is a girl on my left. Please come out. You have raised your hand. Yes. Do not litter the roads. Very good. Please do not litter the road. Okay, please do not litter the road. Very nice. Next one. When you have a what, you have to understand that it is a kind of a question, and then you will put it. Any question word, not only what. Okay. Paramveer Chakra, I can see on my right. Yes, the boy sitting on the third bench. Come out. Yes, come out, come out. Yes, bache. But it's called raised in a What is for dinner today? What is for dinner? And how you cannot forget the question mark that has to go. What is for dinner today? And question mark. Next. Doctor keep apple away and a day the. Okay, who will answer this? Yes, Paramveer Chakra, I can see a hand raised. Blue t-shirt. Okay, you. Before him. You come up. And next one, you can come. Okay? The one who's sitting on the second bench in Paramveer Chakra. an apple keeps the doctor away. An apple a day. Okay, an apple a day. You just missed a day. Okay, but that would make the sentence absolutely wrong. So you have to see that you use all the words. Next. Yes. Yes. Read out the next one. We do get more vegetables. Yeah, we should eat more vegetables and fruits. Okay, vegetables and fruits. You can also use fruits and vegetables, but what has happened here? Fruit ke baad there is a full stop. So fruit should be the last word in this sentence. So we should eat more vegetables and fruits. Okay, because there is a full stop. But grammatically both are right. अगर full stop नहीं होता, you could have interchanged them. Very good. I can see Oscar House. The teacher there, they have already packed the bags. Very, I don't know what to say. Next one. Who will answer this? Okay. Paramveer Chakra, I can see red t-shirt on my left. Red t-shirt. Yes, come out. Seventh one. I watched my favorite show. The Fiji I watched. I watched my favorite show after finishing the homework. One thing you have noticed, after my homework ke baad, there is a comma. So after finishing my homework, comma, I watched my favorite show on television. This was a challenge. I told you not to ignore the punctuation marks. My homework ke baad, there is a comma. So after finishing my homework, comma, okay, I watched my favorite show on TV, on television. So how many of you got this correct? How many of you got? Very good. Very good. I can see very few hands raised because, yeah, but good.
Whoever got it, whoever has done this very well. Very nice. 3 sentences are left. Let us quickly finish them and then you can pack your bags and leave. Okay? Because I know it's your time to go home. Next one. Like what music do you kind of? Wherever there is a question word, you should understand what will come in the front. Okay? So who will answer this from okay, which class? Who wants to answer this? Padma Bhushan, I can see on my left there is a girl. Sorry, on my right there is a girl who wants to come here. Come. And on my in the middle also there is someone who raised hand. You also come for the next question. Okay. What kind of music do you? Very good. What kind of music do you like? And then a question mark because we are asking a question. Without the question mark, you will not get full marks. Okay, CBSE will deduct your marks. Next, an enchanting book. What is it is? An enchanting. Enchanting is very interesting, mysterious, like everything. Yes. Who will answer this? I call that boy. Yes. Yes, I can see a lot of children from Padma Bhushan. Okay, on my left, last bench. On my left, last bench. Yes, come on. But it is an enchanting book. Yeah, what an enchanting book it is. And then exclamation mark. When you read something very impressive, like you're really impressed. So it is like, what an enchanting book it is. What an enchanting. And then a exclamation mark. Next. Couldn't want I to go, however I. Now see, for however, we can use it in the middle, we can use it in the beginning, we can use it in the end. Okay, there are sentences, but this one we cannot use it in the end. So mostly you can use it in the middle or you can use it in the beginning. Okay. I can see only the same children raising their hands. Okay. Okay, you come from here. First bench, you only come from Paramveer Chakra. I could not want it. I could not want. No, wait. No. See, this will be I wanted to go, comma, however, comma, I could not. I couldn't. Okay. So this is how you will use it. I wanted to go, comma, however, comma, I couldn't. Okay, this is the easiest way. This is the way you are going to do this. Okay. Then that's how. Okay, so we finish our worksheet here. I hope this helped you a lot and made things more clearer. If you have any confusion, you can always keep your questions ready for me. I have always told you, don't hesitate. Your questions should be ready. We can have a question answer session, like, whatever queries, whenever you read, whenever you do anything in English, and if you feel, okay, this is what I should know, I don't know it. So you can ask me, okay? And thank you. I think so. It's time for you to go home. You can pack your bags. Thank you very much. Hope it was a very productive lesson. And have a good day, all of you. Have a good day.